और पुष्पों की सुंदर छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इन रथों में अब थोड़ी ही देर में महाप्रभु आकर विराजमान होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है। रथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने हेतु संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य सरकार की विशेष रूप से निगरानी जो है वो दिखाई देती है। हम यहाँ पे पूरी धाम में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। पूरी धाम के दूर दूर से ही अब भक्तों को महाप्रभु का वो मंदिर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी जो है स्वच्छता को लेकर अब जाना जाने लगा है। चारों तरफ से इसको स्वच्छ रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ रथ यात्रा को विशेष ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आज लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आने वाले हैं, जो महाप्रभु के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने वाले हैं। इसीलिए विशेष रूप से जो है ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ साथ भक्तों के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार के आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए भक्तों के लिए सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। जिस प्रकार से एम्बुलेंस है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं, और क्योंकि गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, जिसकी वजह से भक्तों को कहीं किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर के समक्ष ये जो अरुण स्तंभ है, उस पर बैठे हुए अरुण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी वर्ष में एक बार महाप्रभु के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर तोरण लक्ष्मी भी व्यवस्थित रूप से बैठी हुई हैं अपने महाप्रभु के दर्शन करने हेतु। कलाकार न जाने कहां से यहाँ पर आते हैं और अपने कला का अर्घ्य देते हैं। अब देखिए, भक्ति को प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई भक्ति अपने भजन के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, कोई नृत्य के माध्यम से, तो कोई किसी और तरीके से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पार्श्व देवी देवता हैं, और ये जो पार्श्व देवी देवता हैं, ये हर एक रथ के साथ ये पार्श्व देवी देवता होते हैं। ये वर्ष में हर वर्ष इनका निर्माण नहीं होता। ये जब कभी नवकलेवर होता है तभी इनका निर्माण होता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, आप हैं नृसिंह स्वामी हैं, जो संपूर्ण उग्र रूप धारण कर दानव का संहार करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप, जिसने गर्व में मदमाते हुए अपने आप को ईश्वर स्थापित कर लिया था, और जब कभी गर्व बढ़ जाता है तो ईश्वर उस गर्व का दमन कर देते हैं। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जो पार्श्व देवी देवता हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के पार्श्व देवता हैं। हर एक रथ में 9 पार्श्व देवी देवता होते हैं, और हर एक रथ के अलग अलग पार्श्व देवी देवता भी होते हैं। महाप्रभु जब रथ यात्रा में जाते हैं तो भाई अकेले नहीं जाते, वो पूरे के पूरे परिवार को अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से हम अपने परिवार के साथ यात्रा का सुख लेते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु भी अपने परिवार के साथ यात्रा का सुख लेते हैं। और ये विशेषता है इस रथ यात्रा की कि महाप्रभु अपने साथ अपने भाई और बहन को रथ यात्रा में लेकर जाते हैं। लक्ष्मी नहीं जाती साथ में, इसी वजह से तो लक्ष्मी रूठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो साथ लेकर नहीं गए हैं। और इसकी बहुत ही सुंदर दाम्पत्य जीवन के में जिस प्रकार की टकराहट होती है, जिस प्रकार के छोटे छोटे मान अभिमान होते हैं,
इस रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी के बीच के वो मान मनुहार की भी जो है सुंदर परंपरा है, जो रीति नीतियों के माध्यम से इस संस्कृति का, जगन्नाथ संस्कृति का हिस्सा है। ये नृत्यांगनाएं जो कि तैयार हैं, प्रतीक्षारत हैं कि महाप्रभु आएंगे और हम अपने नृत्य का अर्घ्य देंगे। महाप्रभु रसिया हैं, उन्हें कलाओं से प्रेम है। वो वही होते हैं जहाँ पे ललित कलाएं होती हैं। इसीलिए यहाँ पर बड़दांड पर रथ यात्रा के दौरान अलग अलग तरह से कलाकार अपने भक्ति का नैवेद्य महाप्रभु को अर्पित करते हैं। तीनों रथ बिल्कुल सजे हुए, चार माल लगा हुआ कि अब किसी भी क्षण जो है प्रतीक्षा पूर्ण हो सकती है और महाप्रभु परिवार समेत बाहर निकल कर आएंगे और अपने अपने निर्धारित रथों पर आसीन हो जाएंगे। रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो फिर ये रथ यात्रा की जो पूरी व्यवस्था है या पूरी प्रक्रिया है, ये दशहरे से ही शुरू हो जाती है। दशहरे के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक सेवक, भोई सरदार एवं विश्वकर्मा के अधीनस्थ सेवक, जिनको कि रथ अमीन कहते हैं, वो मंदिर प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ महाप्रभु की आज्ञामाल, प्रसाद आदि के साथ नयागढ़ वनखंड के दसपल्ला में स्थित माँ बड़ रावल ठाकुरानी के पास जाते हैं और माँ से करबद्ध निवेदन करते हैं कि हे माँ, रथ यात्रा आयोजित होने वाली है, उस रथ यात्रा के लिए जो आवश्यक काष्ठ खंड हैं, कृपया आप प्रदान करें। माँ अपनी अनुकंपा से आज्ञा देती हैं और वन अधिकारी जो है सहायता करते हैं और नयागढ़, दसपल्ला एवं अभी बोध के जंगलों से ये लकड़ी काटी जाती है और ये लकड़ी जो है धौरा, असन, खासी, सिमली, ये अलग अलग पेड़ों की लकड़ी जो है मतलब लाई जाती है। माघ पंचमी, जिसे हम वसंत पंचमी कहते हैं, काष्ठ को रथ निर्माण हेतु अनुकूल किया जाता है, तैयार किया जाता है और वसंत पंचमी, श्री पंचमी के दिन सकाल धूप यानी सुबह की पूजा होने के बाद दोड़ गोविंद, श्रीदेवी, भूदेवी और महाप्रभु से आज्ञामाल लेकर जो है यहाँ पर विराजते हैं और ये विधि पूर्ण तभी होती है और ये विधि रथ खोला में होती है। रथ खोला वो स्थान है जहाँ पर ये तीनों रथों का निर्माण होता है और यहाँ पे इन तीनों रथों को तैयार करने के लिए काष्ठ खंडों को अलग अलग 3 भागों में अनुकूल करके, अर्थात रथ निर्माण के लिए अनुकूल बनाकर रखा जाता है। और चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात राम नवमी के दिन जो है काष्ठ को चीरा जाता है, अर्थात उनका छेदन किया जाता है और यहाँ पर भी महाप्रभु की आज्ञा माल आदि का होना आवश्यक होता है। ये अरुण स्तंभ के बारे में जानकारी, ये अरुण स्तंभ दरअसल कोणार्क में कभी हुआ करता था, जिसे यहाँ पर विशेष करके लाया गया है, जिसके ऊपर सूर्य के सारथी अरुण जो हैं विराजमान हैं और कहा जाता है कि वो जिस शीर्ष स्थान पर अवस्थित है वहां से सीधे महापुरुष महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो है रत्नवेदी है। आगे बढ़ते हैं रथ यात्रा की प्रक्रिया और प्रविधि के बारे में। अब रथ काष्ठ को चीरे जाने के बाद वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे कि हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, उस दिन रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। उस दिन मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी, पंचमहादेव, रामकृष्ण सहित मध्याह्न धूप की विधि के बाद 3 आज्ञामाल एवं 3 खंडुआ वस्त्र लेकर महाप्रभु के मंदिर से, श्री मंदिर से पंडित आते हैं और तीनों रथों के काष्ठ एवं तीनों रथों के निर्माण के लिए जो निर्धारित विश्वकर्मा हैं उनको ये प्रदान किया जाता है और रथ अनुकूल होता है और अब से रथ निर्माण का प्रारंभ होता है। ये देखिए, ये बर्तन भांडे सब लेकर आ रहे हैं। अब महाप्रभु जो है जा रहे हैं तो साज सामान तो लेकर जाएंगे ही ना। तो रथ निर्माण के लिए कुल मिलाकर 57 दिन लगते हैं और भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न भागों का जो है निर्माण होता है। और सबसे पहले चक्र बनते हैं और चंदन यात्रा के अंतिम दिन अर्थात 20वें दिन जो है चक्रों का निर्माण होता है और 2-2 चक्रों को साथ में जोड़ा जाता है।
वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जिसे कि नृसिंह जन्मतिथि कहते हैं, उस दिन रथ के कोण एवं भुज बनते हैं। और ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी जिसको कि हम शीतल षष्ठी कहते हैं, उस दिन चक्र का निर्माण खत्म होता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा के दिन चार नाहक उठता है, अर्थात रथ को एक आकार मिल जाता है और धीरे धीरे रथ जो है बनकर खड़ा हो जाता है मंदिर के बराबर। आगे की धारा विवरणी अंग्रेजी भाषा में। Now this is the scenery. This is the festive mood that we are presenting you live and exclusive to your homes. This is the festive look of the Grand Avenue that has been decorated, the floral paintings everywhere on the Grand Avenue and on the sideways of the Grand Avenue where the chariots would be moving for the week-long sojourn at Odisha Temple. Now 24 high festivals enliven the religious calendar at Puri. These festivals are associated mostly with the memorable events in the life of Lord Rama and Lord Krishna. And Lord Jagannatha is viewed as none other than Lord Rama and Lord Krishna. This is how the three chariots are parked in front of the Lion's Gate, or that is the eastern gate or the main gate of the temple. The incarnations of Lord Vishnu are said to rise from and return to the same source, the primal divinity, that is Lord Jagannath. So Lord Jagannatha is considered to be no avatar or incarnation, but he is the avatar, the origin and source of all avatars. This is how the temple has been decorated. In the middle, we find the canopy of the Lion's Gate or the main entrance to the temple. On both sides, we find the chariots. Onto the right side on the screen, that is the chariot that belongs to Lord Jagannath. Red being the common color, the dripping for all the chariots. They highlighted that the hallmark color for Lord Jagannatha is yellow because he is understood to be Pitambar. And in the middle, it stands the chariot Devadalana, that belongs to Goddess Shiva. One of the devotees, eager devotees, that he keeps on coming to all the festivals held at the temple. He is dressed uh, uh, like Lord Hanuman. Lord Hanumana is always present there also. He symbolizes the motif on the flag atop the chariot of the main temple. So he comes every year dressed to spread the love, devotion, because devotion is understood to be the part of the life of Lord Hanumana. So this is the draping there, and this is the scenery in front of the temple. Sufficient security personnel and police forces, they are posted there so that no untoward situation happens. Puri, as the abode of Lord Jagannatha, is proclaimed to be the Dasa Avatara Khetra, the holy place of 10 incarnations of Lord Vishnu. I have been telling that Lord Jagannatha is no avatar, but he is avatari. This is how the three chariots are parked, and the three makeshift ladders are also put. And on the left side of each of the chariot, on the right side and on the back side, there are the subsidiary deities are there. Three on each side. So every chariot has got 9 deities, subsidiary deities. On the front, there is the makeshift ladder. And once the Lord alight the chariot, the makeshift ladders would be shifted, and in place of that, the, the horses would be yoked. And this is how they're all parked there. Now, what is this concept of chariot? If we look at the concept of chariot, they are minuscule temples. The way the temples are constructed architecturally, the same formula, the same idea, the same concept is also followed in building up the chariots. These chariots, they are built anew every year. This is the main temple of Lord Jagannatha, the 12th century edifice. The foremost in the background is the main temple,
which houses the sanctum sanctorum, and there stands the visual throne where the lords are seated all through the year, except the period when, except the period for 1 month when he comes out for the Snan Yatra or the wedding festival, till the time he returns to the main temple, the event that is called Niladri Bije, the return to the main temple. And for the rest of the year, for 11 months, lords are seated there, and the devotees, they thrones to the main temple, there to have a glimpse of the Lord, so that they believe that they can find salvation and they can find ablution of all sins. So this is how they can they can have an understanding, have a feeling of the divine presence. Not much of humidity is there in Puri. However, the administration, the district administration, has arranged to uh, make the people or make the devotees feel comfortable. The sprinkling of water is there, that is arranged through the fire brigade forces, and this is how the things are there. And this is one of the entrances there, where people have thrones to have a glimpse. And on the background, we show that the Banati player, this, that's an acrobatic skill that is also presented. Because when lords come out of the temple, it's a procession, and it's a regal procession because he is understood to be the king of all kings. And this is a group of these Sankirtana players, very correctly draped in yellow, symbolizing the highlighted color of Lord Jagannath. Now, Kirtan and Sankirtana, they are two essential parts of the worship of Lord Jagannatha on the Vaishnava traditions. And this is how they are there. I was talking about the concept of the chariot. Now, let's have this is the Aruna pillar. It has got the height of 33 feet and 8 inches from the ground to the top. On the top stands the image of Aruna, or, or Garuda. And it's a marvel. I should say that it has got 16 faceted angles to the monolithic black granite stone. Originally, it was placed in the temple of Konarak there, as Konarak temple that was built in 13th century BC, more than 100 years later to the main temple here. So the deity is Aruna, and this pillar was there in Konarak. And when Konarak main temple got caved in, it was lying idle and unworshipped there. And when the Marathas came to Odisha to conquer Odisha, they saw that, and they were the devotees of Lord Jagannatha. So they brought that monolithic black granite pillar from Konarak to be placed at a very, very amply located strategic point just in front of the lion's gate. This is how the floral patterns, or the Odishan in the Odishan art and tradition, is the ground or the road had been painted so beautifully, because on this the chariots, the holy chariots, they would be moving ahead uh, for the week-long sojourn at the temple house, or the temple, uh, uh, the garden house of Lord Jagannatha, otherwise known as the Gundicha Badi. And when the lords get inside the temple, it no longer attains the status of a body, it becomes the temple. And this is how the seven colored drapings are there on the Aruna pillar. And it is one of the structures where the devotees, once before entering to the main canopy, or the lion's gate canopy, they pay their obeisance there. They touch, they try to touch. And there was no barricade there earlier, before 50 years or 60 years, because to bring safety to the monolithic structure of Aruna pillar, the iron barricading was made. So to bring safety. So this is how the three chariots, they are placed and parked together, and in the order. On the right side, Lord Jagannatha's chariot, Nandi Ghosha, and is the charioteer there, and the maxi platters are also fitted, and everybody is waiting for that moment to come. That inseparable part, the highlighted part of the festival, that is Pahandi. And Pahandi, it's a temple term. It's found in the lexicon of the temple,
and the words, the types of expressions that are found in the temple, they, 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 they come and form a part of the lexicon, and it's called the temple lexicon. And the Pahandi is a word there. It's one of the most fascinating words. This takes its origin from the local Odia word Pahunda. Pahunda means the steps. The way Lord would be stepping, uh, would be alighting from the main temple and would be getting down the 22 steps, otherwise known as the Vaisi Pahacha. I shall be talking about the Vaisi Pahacha in the coming moments. So when they would be, all the lords would be coming with the silvings, would be coming and alighting on the chariots. They would be giving, they would be given a beautiful send off from the temple. And the arrangement is there. We saw the huge pots are there, and they would be filled with the water because the water would be uh, needed for the offerings to be made. Because there are certain offerings they are made while the lords are placed on the chariots, and water is needed. So that is why the holy pots have been brought and filled with water. They will be kept ready on each of the chariots, and this is how the boxes will be also coming, and the boxes will be containing the clothes and the ornaments that mostly the lords would be using during the journey and during the sojourn of the journey and at the time of the return journey or the return festival. And once they get inside the temple, after Niladri Bija, everything will fall back to normalcy and everything will go on as usual for the rest of the period of the year for 11 months. And this is how the flower drapings are there. Flower drapings are to be seen for the last 10, 15 years. Earlier, they used to be not there in such a large way. And on the in the front part of the entrance to the temple, there is the applique is there. That is also a trademark uh, of the Odishan art, this teaching, this teaching traditions. And if you look at the draping, this is the chariot of Lord Balabhadra. They highlighted the hallmark color is green. It's deep green because Puri belongs to that part of the state where the people are dependent mostly on the agriculture, and the state is an agrarian state. So it symbolizes the agriculture, the greenery, and the foliage everywhere. So this is how the highlighted color is there, and everybody is waiting. This is the entrance from the inner yard to the outer yard. The outer yard has got the outside wall that is called the Meghanada Prachira, and this is the inner wall, and this is the hallway that leads from the inner compound to the outer compound. And once the lords get out of this way, they would be alighting the 22 steps, and everybody is waiting for the pahandi to happen, and the agents and the functionaries from different monasteries, they are there, they are waving the chhatri tarasa, because all are put into the service of the lords, because this is the way the grand tradition or the regal procession shall begin from the temple. And this is how the people have thrones to the grand avenue, and this is the point where it opens to the Lion's Gate. From that point, it stretches for about 3 kilometers to the Garden House, otherwise known as the Gundicha Temple. Now, the Grand Avenue is ready, the chariot is ready. This is the chariot of Ganesh Shubhatra, the sister, of the brothers Lord Balabhadra and Lord Jagannath. And it has got beautiful stitchings of different motifs which are understood to be the harbingers of all good luck and welfare for the humankind. And on the top, we find the canopy, and it is got flanked with the twin parrots. Twin parrots, you know, if technically we say that it can give a support to that, but apart from that, it has got the spiritual significance. It has got a mythological presence also. So this is how there is the cordon around the three chariots, and the chariots are ready to begin Devadalanam, and there we find
The gatekeepers are Ganga and Yamuna. That is the middle of the chariot, Devadalana. And it is guarded by Jayadurga. And the rope, four ropeways shall be used to, or the cables they would be put to the Devadalana chariot. They are known as Swarnachuda. Everything has got a name. Every object, even the tiniest of tiny things, has a name. That signifies that nothing is ignoble. Everything has significance in the kingdom of Lord. And that is why hundreds and thousands of people from all over have thrones and are seated, standing, or placed in the most vantage spots to have a close view of the lords. These are the uh, horses, the white horses. They would be yoked to the chariot of Lord Balabhadra. And similarly, Lord Jagannatha chariot Nandighosa would be yoked with dark black horses, black colored horses. And similarly, Devadalana or the chariot belonging to Ganesh Shivadra would be yoked with brown horses. So this is how the arrangement is followed for centuries and centuries. Now I was talking about the concept of the chariot. The concept of chariot is reflected on the concept of the temple. Now the concept of the chariot as the vehicle of the lords of the gods is as old as the Rig Veda. The chariot has been associated with sun god. Those of you who have seen Konark temple, they must have seen. Now there is the acrobatic skill of that is displayed by one of the acrobats called Banati player. Now this used to be the old traditions of the temple. This is used for two reasons. Once to the